Assalamualaikum दोस्तों, welcome to my channel Desi and International Cooking. Today I am here with new delicious recipe. So I hope you will enjoy, you will like the food. So let's go to recipe. मिठाई है. So let's start what we need for baklava. First of all, I have 3 eggs. 3 अंडे ले लेंगे. I have 100 ग्राम मिल्क, 100 ग्राम दूध मैंने ऐड कर लिया है. 100 ग्राम ऑयल, 100 ग्राम मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है. I have 10 ग्राम सॉल्ट और 10 ग्राम मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है. अब इसको हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे. We will mix by hand slowly. And I have also here 1 kg flour और 1 किलो मेरे पास मैदा है, जो कि हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे. We will add slowly flour inside and we will mix. So viewers, you can see our baklava dough is ready. We will keep this one for half hour and after we will start to make. ये हमारा जो है डो तैयार हो चुकी है बकलावे के लिए. अब इसको हम आधे घंटे के लिए रख लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसको बनाना. Viewers, you can see our dough is ready. Now we will start to make. जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी डो है, रेडी हो गई है. अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले इसके थोड़े छोटे छोटे हम पीस बना देंगे. So viewers, you can see we make 5 balls like this. हमने इसकी 5 इस तरह से पेड़ बना लिए. Now let's start to open this one. We have corn flour. पेड़े बनाए हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सा ओपन कर लेंगे इसकी मदद से. उसके बाद हम इसमें स्टिक यूज़ करेंगे. फर्स्ट वी विल ओपन विद रूलर लाइक दिस and after we will use stick. Going open now. We will open little with ruler and after we will use stick because we need more. So viewers, now I will use. तो अब हम इसमें स्टिक यूज करेंगे. Viewers, you can see how our baklava is ready. जैसा कि आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है. काट लेंगे. We will measure how much it is. See,
we will put like this and rest off. Viewers, here I have 400 gram pistachio and walnuts I will use inside. मेरे पास 400 ग्राम पिस्ता एंड बादाम हैं जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे. So here now I have some rest pieces I will put under. मेरे पास थोड़े से पीस बचे हैं जो इसको भी हम इसमें लगा लेते हैं और उसके बाद फिनिशिंग के लिए मैं सबसे टॉप पे गोल वाले पीस यूज़ करूँगा. नाउ ऑन द टॉप वी विल यूज़ दिस वन. इसकी साइडों से काट लेंगे अच्छी तरह. We will put butter now. I have 200 gram butter. मेरे पास 200 ग्राम मक्खन है जो कि मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ है. हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए. Well, this is ready after 10 minutes. Now we will cook in oven 35 minutes 180 डिग्री टेम्परेचर. इसको 180 दर्जे पे 35 मिनट के लिए पकाएंगे. सिरप वी नीड 500 ग्राम वाटर, 1 kg शुगर. और इसका शरबत बनाने के लिए हमें 1 किलो चीनी चाहिए और 500 ग्राम पानी. यानी कि 1/2 लीटर हमारे पास पानी है और 1 किलो चीनी है और छोटा सा पीस सिनामोन का इसमें दालचीनी का डाल देंगे. लिटिल पीस ऑफ सिनामोन वी विल ऐड फॉर गुड टेस्ट एंड वी विल वेट. नाउ वी विल ऐड ऑरेंज. थोड़ा माल्टा ऐड कर लेंगे तो इसका जायका बन जाएगा. एंड 5 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएगा. So viewers, you can see our baklava is ready. Now we will put syrup inside. आप देख सकते हैं हमारा बकलावा रेडी है. हम इसमें जो हमने शरबत बनाया था उसको ऐड कर लेंगे. Now we will keep this one for half hour because a syrup will take inside. हम इसको आधे घंटे के लिए रख लेंगे क्योंकि ये जो शरबत हमने डाला है वो इसमें जज़ब हो जाए. उसके बाद इसको गार्निश कर लेंगे. हमारा बकलावा रेडी है. अब हम इसको गार्निश कर लेंगे.